कि ओके ऑल राइट शाश्वत श्रीनिवासन आदित्य हेलो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ओके हेलो फ्रॉम सिंगापुर सईद भाई हेलो नूब हेलो और तनय परमेश ओके आवाज आ रही है वीडियो दिख रहा है अभी सबको उस पे एक कमेंट पे नहीं हम चारों को तो दिख ही रहा है आई एम श्योर नहीं वहां भी बट बाकी लोगों को ऑडियंस को दिख रहा है या नहीं दिख रहा वो एक बार जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ नहीं आई चेक्ड ऑन YouTube Yeah, it's there दिख on रहा है YouTube. यस ओके 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 कूल है ठीक है हाँ जी तो स्टार्ट कैसे करेंगे yes audio and video is clear so we crib about Adani first and then we go to Q&A or we take some questions and then crib about Adani I think however you want to do it, let's just go with the flow. हाँ ठीक है so in हाँ क्या बोल रहे दीपक पहले रोलो थोड़ा सा ठीक है कोई दिक्कत नहीं सबसे पहले रोलो पहले दिन कैसा गया भाई सबका आई प्लेड क्रिकेट मैच हारे बढ़िया से तो स्कोर भी नहीं किया हेलो सर किरणजीत दास जी हेलो तो मैच भी हार गए स्कोर भी नहीं किया तो फिर एक ही ऑप्शन था उसके बाद जाके शांति से बियर पी लो तो एक बियर पी के आ गए I'm down with a gastro flu, so I can't even drink any beer. क्या हुआ है अरे गैस्ट्रो फ्लू बाहर जाके खा लिया इतना बारिश हो रहा है मुंबई में ओके so हमारा सही था बिल्कुल थोड़ा चिल संडे हो गया रिलैक्स फॉर अ चेंज यूजुअली कुछ ना कुछ मार्केट का देखते रहते हैं आई टुक अ कॉल ऑफ नॉट लुकिंग एट एनीथिंग टुडे सो कंप्लीटली रिलैक्स कूल बढ़िया तो मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ सबका क्योंकि आई थिंक फ्यू पीपल माइट नॉट नो गौरव प्रणव और दीपक दे ऑल आर माय गुड फ्रेंड्स वो सब स्टॉक ऑप्शन ही ट्रेड करते हैं मोस्टली तीनों इंडेक्स में दीपक भी करते हैं थोड़ा सा बाकी आई डोंट थिंक प्रणव एंड गौरव प्रणव डज अ बिट ऑफ इंडेक्स एंड ट्रेंड फॉलोइंग आल्सो So Pranav does a lot of trend following along with the stock vol trading, and Gaurav does a lot of stat based stuff. मतलब बहुत सारी रिसर्च करके कुछ पेयर ट्रेडिंग कुछ और पता नहीं क्या क्या करता है तो गौरव is one of those guys. I think दीपक का इंट्रो देने की जरूरत नहीं है दीपक को I think most people know. How to get started in SSO, do's, don't, precautious etc okay Ankit Singh पूछ रहे हैं how to get sorry guys I was introducing you all if you want to add something please go ahead No, I think that's a fantastic question to actually use as a bouncing off point. Okay Gaurav you good yeah my major book now is not single stock option it's majorly futures now so trying to find those places where I can put more directional bets या फिर relative value bets तो stock option like the volatility book is smaller now for me oh okay ये चेंज कब हुआ ये धीरे-धीरे सर हाँ ट्रांजिशन हुआ होगा आई एम श्योर बट मतलब कितने 3-4 महीने 6 महीने हो गए हाँ मतलब so this has been now about 4 months तो हो ही गया Okay, nice. Good evening, विश्व कल्याण रथ कौन लग रहा है भाई मैं तो मोहम्मद सिराज हूँ Okay, so I think we'll get started. Ankit Singh पूछ रहे हैं how to get started in SSOs, do's, don't, precautious, etc. तो यार एक तो SSO मतलब जो इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स ही रखते हैं आई थिंक सो जो मेरी स्टाइल है ट्रेड करने की मोस्टली इट इज वोलेटिलिटी शॉर्ट साइड तो लॉन्ग भी रहते हैं तो मोस्टली शॉर्ट साइड है क्योंकि शॉर्ट साइड में थोड़ा थोड़ा पीएनएल जनरेट होता रहता है धीरे धीरे लॉन्ग साइड में इट्स मोर लाइक ट्रेंड फॉलोइंग जहाँ पे एक कोई ट्रेड ऐसी होगी लॉन्ग वॉल की जो ज्यादा पैसा बना के दे देगी विज़ावी बाकी के 4-5 ट्रेड्स के
तो शॉर्ट वॉल साइड में सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है, अगर स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करने हैं, तो एक तो अंडर कैपिटलाइज्ड नहीं होना चाहिए. मतलब इंडेक्स में यू कैन स्टिल थिंक अबाउट ट्रेडिंग विद 5 लाख काइंड ऑफ कैपिटल, बट स्टॉक ऑप्शंस में कम कैपिटल से एटलीस्ट, अगर मतलब ऑप्शन सेलिंग साइड में कर रहे हैं तो कम कैपिटल से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना चाहिए. और डूज एंड डोंट्स में ये है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू कैन स्टिक टू द वंस विच आर मोर लिक्विड, विच आर हैवी वेट्स. निफ्टी 50 के बाहर या मे बी निफ्टी 50 के बाहर भी जा रहे हो तो उनमें भी कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी लिक्विडिटी एट टाइम्स इट इज वेरी ड्राई. ठीक है, वो मतलब साइक्लिकल होता है, कुछ न्यूज आ गई तो उस टाइम पे लिक्विडिटी है, अदरवाइज एकदम गायब हो गई. कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में ही जाते रहते हैं. डेल्टा कॉप हो गया, जील हो गया, इंडिया बुल हाउसिंग हो गया, भेल हो गया, ये सारे स्टॉक्स है जो मतलब मोर ऑफन देन नॉट दे आर इन बैन ओनली. पीएनबी हो गया. तो try to avoid those stocks at the start. Although at times these stocks do give better opportunity in on the wall short side. मैंने देखा है कि अगर ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो वॉल शॉर्ट ट्रेड्स इनमें अगर रहती हैं तो वो जल्दी पैसा बना देती है when they go in ban. But if you are starting out, then obviously that's not suggested that you do that. What else? एक्सपोजर बेस्ड ट्रेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, स्टॉक ऑप्शंस में. आई थिंक कहीं भी है वो इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट इन स्टॉक ऑप्शंस, एवरीवेयर इट इज इम्पोर्टेंट. सो बट अगर आप एक्सपोजर बेस्ड करोगे तो ऑब्वियसली इफ यू हैव लेस कैपिटल, लेट्स से 5 लाख 10 लाख, देन एक ही स्टॉक में एक्सपोजर unwantedly it will be more, right? Because कोई भी underlying it is at least 6-7 lakhs, right? There are very few underlyings which are less than 5 lakhs. तो अगर 6 लाख के underlying है और अपना अकाउंट साइज ही 6 लाख है तो 1x एक्सपोजर तो एक स्टॉक की एक पोजीशन लेने में हो ही गया. So these are the things that you can keep in mind. बाकी ऐड करो यार, गौरव, दीपक, प्रणव. I think they have to remember one thing, that I won't say that tail events happen more often in options. Of course, they're tail events, but in SSO, you will have those drastic, for no rhyme or reason, moves where the stock will just go by 10-15%. It's not no rhyme or reason, but they will go by 10% far more often than you will have in the index. So you have to be more careful there. The realized volatility is so much more higher in SSO as compared to the index, and that is something when someone is making a transition from the index to the SSO, they have to keep it in mind. And also, I mean, not just the realized that is higher. I think implied also, if you look at implied volatility of index versus stock options, any day most of the stocks will have higher implied vol compared to indices. And precisely the reason behind that is because the realized also is otherwise it is free money sitting on the table, right? If it is like कि भैया implied ही है, उसमें सारा realized होती नहीं है vol, तो it's like free money है, बेचते जाओ options, strangle और पैसे बनते जाएंगे. The reason I was saying this, like we had that thing with the AU Small Finance Bank, and which was that other bank where just because the CEO was said, okay, he will continue to be CEO for the next 3 years, went up by 15%. I was like, what? Status quo means the stock goes up by 15%. बस ठीक है. वैसा ही है. तो इसमें जब ऐसा होता है तो उसके बाद मैं स्टेप इन करता हूँ. तो यूजुअली मैं न्यूट्रल कुछ स्टार्ट नहीं करता. मैं जब ऐसा कोई बड़ा कांड होता है, 15% बढ़ गया या जो भी हो गया, तो आई गो विद द व्यू दैट कि अब ये इतनी आसानी से नीचे नहीं आने वाला. अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सिंपली आई क्रिएट कि भाई एक पुट सेल करते हैं, 2 कॉल लॉन्ग करते हैं, 3 कॉल शॉर्ट करते हैं, एंड लेट्स अज्यूम कि इट विल कंटिन्यू ऑन द अपसाइड. इफ इट डज देन इट मेक्स मनी, इफ इट डजंट देन एक एक्स्ट्रा कॉल सेल करो. जो डेबिट है अपना स्ट्रक्चर में उसको टेक केयर करो, एंड मोस्टली इट विल टेक केयर ऑफ यू. जब भी वो वॉल क्रश होगा, देन यू विल इवेंचुअली बी मेकिंग मनी इफ द स्टॉक रिमेन्स इन अ रेंज. So I call this as that big candle breakout
which usually takes place in a stock when it crosses some resistance and gives a breakout above that. Like जैसे अभी निफ्टी में हुआ था 2 दिन पहले कि जब ऑल टाइम हाई हिट किया तो वी हैड अ प्रीटी डिसेंट कैंडल इन निफ्टी और उसके बाद ऊपर में कंटिन्यूएशन भी आया. तो मैं उसी लोकेशन पे फोकस रखता हूँ जो एक टाइम पे रेजिस्टेंस है और वहां से अगर ब्रेकआउट होता है बड़े एटीआर के वे में आप उसको जज कर सकते हो बेटर कि आप हाई एटीआर से उसको कंपेयर कर सकते हो बिग कैंडल क्या होता है. सो एटीआर में जैसे डिफॉल्ट सेटिंग होता है आपका 20 पीरियड एटीआर. सो आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि करंट जो कैंडल है वो इज दैट अ मल्टीप्लायर ऑफ द 20 पीरियड एटीआर. सो आई यूजुअली टेक कि भाई 1.5 टाइम्स होगा तो मैं उसको बड़ा कैंडल कंसिडर करूंगा. बिकॉज हम ऐसा तो बोल नहीं सकते यार 5% कैंडल बढ़ा है क्योंकि एक टाइम पे इंडिया बहुत हाउसिंग था तो वो तो 5% तो नॉर्मल होता था उसका 5, 7, 8% रोज का कैंडल बनता था. सो कंपेयरिंग विद द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक कि वो क्या कर रहा है तो 20 पीरियड एटीआर इज अ डिसेंट एंड कंपेयरिंग विद 1 एटीआर तो अगर 1.5 टाइम से बड़ा है तो मैं उसको बड़ा कैंडल कंसिडर करके ट्राई टू टेक अ ट्रेड इन स्टॉक ऑप्शंस. सो मैं इनिशियली रखता नहीं हूँ परपेचुअली कि भाई हर 5, 10, 15, 20 स्टॉक्स में है पर जहां एक्शन ऐसा होता है कि बड़ा कैंडल बन गया वहां आई ट्राई टू गेट इट. Cool. Amey is asking, why don't you trade index options? Like, why do you feel stock options are better? Just wanted to know your point of view. Thank you. Okay. So मेरा एक ही रीजन है, एक्चुअली दो तीन रीजन है स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करने के. सो वन ऑफ द रीजंस इज व्हेन यू आर ट्रेडिंग वॉल यू नीड मोर अंडरलाइंस, राइट. इंडेक्स में वी यू जस्ट हैव निफ्टी, बैंक निफ्टी, टू सम एक्सटेंट फिन निफ्टी, एंड देन अभी नए नए इंडेक्सेस शुरू हो रहे हैं. सो अगर वॉल ट्रेड ढूंढनी है, अगर वॉल लॉन्ग या वॉल शॉर्ट ट्रेड ढूंढनी है, सो इंडेक्स में ऑब्वियसली देयर आर जस्ट 2-3 stocks, there are 200 out of which at least 100 are tradable. So you have a basket of stocks wherein you can identify which stocks are good for shorting wall or which stocks are good for going long wall, and then accordingly you can take the trade. Second reason is index, the walls are low. So if primarily my option book is on the wall short side, so if I'm keeping that on the indices, then the exposure will be higher, to generate the same kind of returns that I might generate using stock options, and that is something which I personally don't like. And as we say in trading that there are many ways to make money from trading. Everyone has their own style of trading, and something suits some people, something doesn't suit someone. So it's just that I find it easy, or rather it is comfortable for me to trade stock options than to trade index options. How much time drawdown can be criteria to judge the performance of the system? Gaurav, you want to answer that? So I don't think you can essentially quantify how much time drawdown is actually like good or not. First of all, when we are looking at markets and we are looking at कि भाई ये currently historically ये एक price path किसी एक asset ने लिया है, like निफ्टी ने ये price path follow किया है पिछले 10 साल या 20 साल. That's just one part, one universe that we are seeing. That's one price process that has happened. If you're building a system based on and looking at drawdown on the price that happened past 10 years ka data leke, what is to say that the next 10 years will be similar to that? So when someone says I'm looking at this system and this is my time drawdown or this is my drawdown, the biggest assumption you're making is that what happened in the past is supposed to happen in the future, and that's not something that I can get behind. So whenever I'm building my own trading ideas or trading strategies, I'm never looking at drawdowns that happened historically. I want some kind of a reason why that trade makes sense, and manage my risks accordingly, and then trade that. So I generally do not look at drawdowns and have no idea of talking about drawdowns, because I don't believe in the assumption that past is going to be the future will be the exact same in terms of price path
as it was in the past. Okay, I'll also add something to that. The thing is, what has worked in past may not necessarily work in future, like Gaurav said, right? So we might develop some system. Okay, it could be any system which we have back tested and it works nice, and we might have got good results during the back test, and we start trading it. But it is very much possible that down the line, 6 months, one year, 2 years, it may stop working. And there is no way to identify when will a particular system would stop working. I will take this example of 920 straddle. Gaurav said a point that I want to know why a particular system makes money, right? Any system. So when this 920 straddle became a thing, probably 2 years back, I was one of those who was like, यार क्या है ये, मतलब ऐसे पैसा कैसे बन सकता है? I was totally kind of against it. Not against it, but I was in a belief that this is something that cannot work, and that cannot go, that cannot work in a long run. So I was of that belief, simply because I thought that what is it that we are doing, just by putting SL on each leg and waiting it out. I did not obviously think it through at that point in time, that it is a mix of directional and non-directional system. I thought of it as completely non-directional system, which is like selling, because essentially we are starting a delta neutral trade, right? And then I thought of it as only delta neutral trade, but it became a directional trade. And when people started analyzing it, why 920 makes money, then the answer came that it is not from the market's nature of being probably range bound, as they say, but it is more from the trend days. When market trends, and when the one of the leg stops gets taken, other leg makes money. So that's how I also like to think that, whatever makes money, why does it make money? So the only reason I was against this system at the start is I believed that, this does not make sense at all. So yeah, that's that. What else? And we have seen that, it made a lot of money. That 920 system also made a lot of money for people in 2020 as well as in 2021 also. 2022 it did not do well, and people have struggled making money from 920, as far as I know, as far as I interact with people. So that's the state of 920. Yeah, Gaurav, you were saying. No, I was not saying. Pranav, you were saying something. There's a question here that you somewhat related in the chat, in the comments. Do you think the era of time-based straddle is close to extinction given the influx of countless such traders? So it's directly related to what you're saying. So I was pointing that out. See, if there is easy money, free money available, for everyone to trade, then that trade will vanish from market. It's like arb trades that we see, right? If there is an arb opportunity that gets created in the market, after some point in time it gets vanished, right? Somebody takes that arb. So if it is, so 920 is more like an easy money, right? You don't have to do anything, just put SL on each of the legs. उसमें भी डिवाइड कर दो, सुबह 9-20, 10-20, 12-20, 11-20, और डे के हिसाब से थोड़ा सा परसेंटेज भी डिवाइड कर दो, 15%, 18%. So if it is making money, then it is very easy money, right? You are literally doing nothing to make money trading, and that too you have put it in an algo. So if it is making money and it continues to make money for a longer period of time, then obviously more people will come in, and it'll probably stop making that kind of money which it did a couple of years back, and that's exactly what is happening. And to answer that whether it will continue to make money or not, nobody knows. But my gut feel is that probably the pain which these traders are seeing, they'll probably see it for some more time. That will kick some players out from the market, and probably stop other players from joining this trade also.
and then who knows, it may start working again, right? Because the erratic price movement that we see these days in indices, for no reason, index would go 50 points down, and then for no reason it will again go 100 points up. So whether it continues to happen that way or not, nobody knows. But that's my gut feel. Deepak कुछ ऐड करेंगे इस पे शायद. ऐसे ही है यार, ये तो आई मीन कोई लॉजिक तो है नहीं कि व्हाई इट शुड वर्क, व्हाई इट शुड नॉट वर्क. और तुम्हारी बात ठीक है, जब ज़्यादा लोग उसको छोड़ देंगे, मे बी दे फाइंड सम बेटर सिस्टम जिसमें ये जो इसके जो फॉल्ट्स हैं वो रिफाइन हो जाएं. जैसे मतलब ऑलरेडी बेटर सिस्टम्स पे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये 50 पॉइंट का रेटिंग मूव आता है, उसका क्या सोल्यूशन है. तो क्या करेंगे, 1 लेग के स्टॉप लॉस की जगह वो स्ट्रैडल पे ऐसे लगाना शुरू कर देंगे. So अगर पूरा मार्केट combinedly is moving up, then they exit their trade rather than chopping around कि पहले उधर ऐसे हुआ फिर दूसरी टांग कटी. तो बेसिकली वही, जैसे मार्केट इवॉल्व हो रहा है वैसे ही ट्रेडर इवॉल्व होंगे, वैसे ही 920 भी अपने आप को इवॉल्व करेगा और रहेगा मार्केट में. क्योंकि इसमें सुना है मैंने काफी बड़ा पैसा लगता है, काफी ब्रोकरेजेस बड़ा इस पे. तो ये तो रहेगा, सिस्टम रहेगा, थोड़ा और रिफाइन हो जाएगा, और ज्यादा डिफाइंड हो जाएगा, और ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, ज्यादा वर्जन्स आ जाएंगे. तो और प्रोबेबली रिटर्न्स वुड गो डाउन. रिटर्न्स विल नॉर्मलाइज, वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे जैसे बाकी स्ट्रेटजीज के होते हैं, वो वैसे ही हो जाएंगे. तो मेरा एक पॉइंट था, मतलब हम कभी बात नहीं करते कि मोस्टली व्हाट काइंड ऑफ मार्केट रिजीम वी आर इन, कि भाई जैसे करंटली एकदम से बोल देंगे कि भाई बुल मार्केट है, कल को मार्केट यहाँ से गिर जाएगा 500-700 पॉइंट, तो फिर बोलेंगे यार बेरे मार्केट है, और ये तो इलेक्शंस आ रहे थे एंड वी शुड हैव सीन इट कमिंग, कि माल बट रहा था और माल बट गया और अब सबको लो बना दिया. तो वो मतलब एक बार बात बोल दो आप, वो जोफ्रा आर्चर की तरह, वो कभी ना कभी ट्रू हो जाती है बाद में, कि भाई मतलब जो बेयर्स ने बोली है वो आगे 6 महीने में ट्रू होगी या 1 साल में ट्रू होगी, उनको भी मौका मिलेगा रिट्वीट करने का. तो मेरा पॉइंट ये था कि जैसे अभी मार्केट रिजीम है अपना कि पूरा फुल ऑन बुल है, 50 पॉइंट 100 पॉइंट का डिप आता है, या फिर आप मार्केट डाउन डेज भी हैं, तो यू विल फाइंड स्टॉक्स व्हिच आर हिटिंग 10% अपर सर्किट नॉर्मली, और अक्रॉस द बोर्ड 5-7 स्टॉक्स आर अप 5-7%. तो इसको आप जब सिंगल स्टॉक ऑप्शन करते हो तो उसके फ्रेमवर्क में कहीं ये डिफाइन करते हो या कर सकते हैं, और डज दिस लीव बेटरमेंट कि भाई हम शॉर्ट वॉल की जगह इस टाइम पे अगर लॉन्ग वॉल नहीं लॉन्ग साइड पे ही प्ले करें पूरा, कि भाई लेट्स बी शॉर्ट पुट्स और आइदर शॉर्ट पुट्स और बी लॉन्ग कॉल्स और बी कीपिंग अ रेशियो इन अ स्मॉलर वे, कि भाई 2-3 रेशियो नहीं रखना चाहिए, 1:1 या 1:1.5 टाइप तक सीमित रखें अपना, क्योंकि बुल मार्केट है, लेट्स प्ले लाइक कैश मार्केट प्लेयर्स आल्सो समटाइम्स, क्योंकि मोटा पैसा लोग इन्वेस्टिंग से बनाते हैं. तो आई मीन दैट वाज माय क्वेश्चन. मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मतलब मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे CSPs पड़े रहते हैं. तो अनलेस जैसे मतलब रिजीम चेंज हो जाए, थोड़ा लगे कि फियर है और मार्केट नीचे ही जा रहा है, लोअर लोज बना रहा है, उस टाइम पे मैं CSPs नहीं रखता हूँ. बट अभी जब से ये अपवर्ड मूव चालू हुई है, तो 2-3 स्टॉक्स में तो एटलीस्ट कैश सिक्योर्ड पुट्स रहते ही है. बाकी कॉल लॉन्ग करके लॉन्ग करना या फ्यूचर लॉन्ग करना, ये मैं तो नहीं करता. आई थिंक प्रणव काफी हद तक करता है, एंड अभी रिसेंटली काफी कुछ बड़ा मूव भी कैप्चर किया है प्रणव ने L&T FH में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द स्टॉक. No, Lupin and Sun Pharma and those. Lupin. No, I had a see. Ultimately, if you're playing a CSP, you are taking a directional bet on the stock. My theory was just simply this: if I'm going to risk a directional bet, then I want the deltas and gammas on my side. Yes, I might have a much lower probability of profit,
But if I'm going to take the directional bet, then I want delta and gamma on my side. So then I'm going to go with long vol. That is my only thing. Whether it's going to be via futures or mostly with options, because I like limiting my risk and I'll keep rolling them forward. Whatever knowledge I have of options, I'm trying to bring into trend following in a way, in whatever I can do. But that is why I don't go with CSPs anymore. It'll be with a spread, it'll be with futures, it'll be with options. When the market is giving you a directional move, I want gamma and delta on my side. That is my theory. Which is good. It's just that I still haven't got my head around directional trading, so I stick to what I do. But yeah, I mean that's a better way of doing directional trades. I'm not denying that at all. I mean CSP, I'm only going to make as much as I've sold the put for. Long call, who knows? But then you have the advantage of being able to do your adjustments. You have the advantage of a higher POP. You take all of those. You've got. So there's a trade-off. The market's not giving free money anyway. Right, in any case, there's a trade-off that you have to take. Gaurav, I think. Yeah. So I was making a point of saying, when someone says bull market or bear market or whatever, how are they defining it? There are plenty of people in academia and in industry that are trying to really forecast regimes, and it's not an easy game. So saying कि भाई ये regime चल रही है and ये चलेगी, like you're saying, what is the current regime? It is likely to go on. There is no statistical way to say that this will go on. There is no statistical way to say this will end. So first of all, there is no clear definition of a bull market or a bear market that can be used to do the testing. When you look at research papers, almost all of them give a definition. This is what we are calling a bull market. This is what we are calling a bear market. So there is no universal definition. And then it's not so easy to say abhi chal raha tha to chalta rahega. You're essentially saying that there is an auto correlation in the conditions in the market. कि ये जो हो रहा है वो होता रहेगा. अब वो that's not statistically, I don't know if it's statistically backable, and since that is my game around knowing कि भाई statistically backed होगा कि नहीं होगा, most of my trading does not include me changing anything based on what is going on in the regimes, because I don't know what regime we are in. There is no way to predict. So just do the things, just do good trades that work out on average. So if there is some change in the market behavior, you have some other strategies that will be making money, and there will be other times that those strategies will not, and some other strategies will make money. Oh, absolutely. इसमें गौरव, इसमें मैं एक चीज ट्रैक करता हूँ कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं अपने एफएनओ यूनिवर्स में या फिर कैश मार्केट यूनिवर्स में, उनमें से कितना परसेंटेज स्टॉक्स हमारा हाई मोमेंटम में है. सो मोमेंटम कैन बी इजीली डिफाइंड बाय RSI above 60 or your CCI above 100. So this is basically a quantifiable way to define कि कितना परसेंटेज ऑफ मार्केट आपका मोमेंटम में है. तो इसी को अगर हम प्लॉट करते हैं ओवर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, तो इट यूजुअली गिव्स अ वेरी बेसिक आइडिया कि वेदर द मोमेंटम इज ऑन बाय साइड और द मोमेंटम इज ऑन सेल साइड और द मार्केट इज न्यूट्रल. तो मैं डेटा ट्रैक भी करता हूँ अपने एंड पे, एंड टीवी पे अनुज सिंगल है, वो भी काफ़ी बार एक चीज़ को प्रोजेक्ट करता है कि भाई नंबर ऑफ स्टॉक्स इन्होंने 52 वीक हाई ऑन डेली बेसिस हिट किया है. So that is also one way to measure कि मार्केट में कितना मोमेंटम है. So 52 वीक हाई और 52 वीक लो, ऑल्दो वो डिस्टेंस कैन वेरी, वो एक अलग ही पैरामीटर है. अगर स्टॉक्स बीच में है, rather not hitting 52 week high, not hitting 52 low, but still can be in momentum up और momentum down. तो इसको जब क्वांटिफाई हम कर सकते हैं, तो आई थिंक इसको यूज भी इस तरीके से कर ही सकते हैं टू डिफाइन कि अभी बुल फेज, आई मीन नॉट बुल मार्केट की भाई 2 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, बट वी कैन से दैट कि जो करंट फेज है या फिर जहाँ पे अब हम हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम टुडे, वो एक बुल फेज है.
एंड उसमें भी मैं एक रिट्रेसमेंट भी यूज करता हूँ कि लेट्स से 110 स्टॉक्स आर इन मोमेंटम इन FNO यूनिवर्स ऑफ आउट ऑफ 195. तो अगर दैट नंबर ड्रॉप्स बाय 20% in a day, then that basically indicates that momentum has broken from up to being going to neutral, and then probably can go down also. तो उस वजह से आई थिंक एक स्टैट तो और ब्रॉडर आइडिया तो लग ही जाता है. आई डाउट कि वो किसी रिसर्च पेपर में क्यों नहीं था. Fair enough. I'll probably get that data and try to do some work around it and देखता हूँ. अगर if but I think I still keep thinking that calling something a regime is not so easy as just getting a bunch of data. And first of all, as in predict नहीं करना ना. हम तो करंट डेटा को ही देख रहे हैं कि आज क्या चल रहा है. So हाँ, तो वो करंट डेटा से then you're making an assumption कि जो करंट हो रहा है वो कंटिन्यू करेगा. Now, is that backable? That is the point. yes. But so Gaurav, if I may, what you're saying, here's the issue. Throughout the history of not just, you might say, okay, are we looking at only Indian markets or other markets? Trend momentum has been pretty universal in almost all markets. Now, let's leave aside the classification of whether you want to call it a bull market, bear market. Those are just words to put. Those are just words that are for TV channels to use. The main thing, what I think Deepak is trying to say, is that he has got certain measures which tell him whether the market has trend and momentum, both of which we know have been shown to exist in all markets throughout almost all of history. So leave aside the regime. Let's just call it trend and momentum, which is what Deepak is saying. Yeah, current trend basically. Yeah, that's fair. So saying that the market is currently trending or market is currently in momentum, yes, that sort of makes sense. Then that comes is, the I think, closer. The rest is just, TV talks. It's just for the channels to say, oh, we're in a bull market, we're in a bear market, all of that. We as traders care about what is happening now. We aren't ultra long-term traders. Even in a trend follow, we'll have what? A 1 year perspective, 2 year perspective. What is that? So naturally, we're talking about the current market. The rest is just words, in my opinion. Fair enough. Okay, I think we can start taking some more questions now. You wall short purely based on Greeks, or you also look at price action, and for how long do you hold the trade? So how long do I hold the trade? It is probably my average holding period for a trade is around 4-5 days. So whether be it on the long wall side or the short wall side, it is around 4-5 trading days. So that's the holding period. And purely, actually तो ग्रीक्स में एक वॉल ही है जो देखते हैं शॉर्ट करने के पहले. सो दैट इज मोर लाइक IVHV. बाकी प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस टू मेक to take a decision on whether to adjust or whether to exit. That's the only thing. Otherwise entry के लिए तो price action usually नहीं देखता हूँ. Hi sir, if I generate 20-25% profit every year from trading and don't invest any amount in equity portfolio, is it the right approach, or is it compulsory to invest in equity? दीपक भाई आप आंसर करो ये. नहीं यार, आप इतना कमा रहे हो तो काफी है. और पार्टिसिपेट अगर आप करना चाहते हो और टाइम नहीं लगाना चाहते हो तो मे बी म्यूचुअल फंड डाल दो, या फिर you can park that capital into your some government bonds or something जो 7% आपको earn करे उसके ऊपर. So that can be something that will not disturb your flow of trading. हाँ, so मतलब safe
G-Sec बॉन्ड्स वगैरह वो सब ले सकते हो, तो उसमें 7% आ जाएगा। थोड़ा अगर इक्विटी साइड में रहना है तो निफ्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर दो या लार्ज कैप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, सो यू कैन जनरेट एडिशनल रिटर्न ओवर द 20-25% that you have been making. करना है। How to identify volatility is high and may melt in coming days? How exactly we should interpret IV, HV, RV, HV20, HV20? I think all this I have covered in some of my earlier videos. You know, how do I have done a video on how do I identify a vol short trade. So right from the start, you know, what is it that I look at. So all of that has been covered in video. So it's basically a combination of you know, the current IV. IVP, what's the price action? Price action may be a little bit, and then whether the IV is above 30 days, 10 days HV, and those kind of things. So that's what I look at before identifying a vol short trade. And you know, nobody can say with at least some certainty that a trade would make money or not. You know, your question was whether it may melt in coming days. So I mean, even for a stock which has, let's say, very high vol, and you know, then also we cannot say that the vols will go down. You know, it happened in Adani when we saw the vol rising from maybe 50 to 100, and we thought, okay, 100 is an extreme, you know, for a stock. And then we saw it at 120, 150, 200. I think it went up to 300 or something, if I'm not mistaken. The IV of Adani Enterprise at that point in time, it went up to 300. You know, so at one point in time, we were shorting straddle, which was giving us say 15, 16%, 18% kind of a range. To a point, it came, you know, when it was giving 30%. I think max we saw 25 or 30% on one of the days, right? When it was giving that much cushion. And rightly so, because the stock was moving around so much. You know, the realized vol was so much. It was 30% down in a day, then again 20% up, then 50% down, then 50% up. I don't know what was happening. We were just caught off guard in that trade, and you know, lost a shitload of money. So nobody can say with any certainty that a certain trade would make money unless it's a, you know, risk-free ARB, when we know that, okay, this is more of a risk-free ARB, pennies which we say that we are collecting. Right. When you trade in SSO, is it a directional or a non-directional approach? So mine is mostly non-directional to start with. What Deepak does is Deepak takes a bullish biased trade mostly, wherein he's shorting a put, and if he's doing something on the call side, it is mostly a 2:3 or 2:4 kind of a call ratio. So that, you know, deltas are positive for him. Pranav does directional as well, non-directional as well. Gaurav, I think Gaurav किधर है? Gaurav अभी काफी कुछ कर रहा है. आ गया. So सबका trading style थोड़ा सा बता रहा था कि directional, non-directional. So I don't know anymore what Gaurav does. So I do a lot of volatility trading तो करते हैं. So I have a book that is long and short vol. So long somewhere, short somewhere. Then I have a different part of my book that is on pairs trading. So essentially finding good relationships that have stretched and betting on the convergence of it, and some of the relative value trades based on a basket of stocks giving a certain price, and based on that. So most of my trading now has directional bend to it, and a bend of more relative value and relationship based rather than anything else. And then there is volatility trading, of course. Okay. गौरव, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार आपके लिए. वो पूछ रहा है विच बियर. मुझे लग रहा है आप कॉफी पी रहे हो. कॉफी पी रहा था. कॉफी है भाई, कॉफी है. निफ्टी का टारगेट चाहिए नेक्स्ट, क्या होगा बताओ. 12,000.
12,000 अटल सत्य है, निफ्टी 12,000 आएगा आएगा आएगा, लिख के ले लो। शिवम गुप्ता जी पूछ रहे हैं, डू यू यूज मार्जिन फॉर ट्रेडिंग यूजिंग, आई डोंट इन्वेस्ट इन G-Secs। मेरा जो नॉन कैश कंपोनेंट है वो मोस्टली इक्विटीज में ही है, सो आइदर इट इज लिक्विड बीज एट टाइम्स और इट इज मोस्टली इन इक्विटीज। तो मेरा कैश में रहता है सारा, तो मैं बाकी ये G-Sec या FD वो सब नहीं करता। और कोई दीपक करते हो G-Sec आप? यार मैं भी नहीं करता। कोई गौरव, प्रणव? नहीं। नो। तो मेरा मोस्टली अभी एट दिस पॉइंट आई थिंक 30% तक ट्रेडिंग कैपिटल का इक्विटीज में होगा, अराउंड 30% तक इन्वेस्टेड, जो मैं अब धीरे धीरे करके शायद ऑफलोड थोड़ा शुरू करूँ। वापस मौका मिलेगा ना ना मिले वो पता नहीं, बट ठीक है, देखी जाएगी। तो अभी तक ऐसे कोई साइंस नहीं है कि ऑफलोड करने की जरूरत है, but probably I'll start offloading some bit of it. Please guide a little for long wall, how to find opportunities, position sizing, and how does it compare to short wall, Indian market context. तो यार अगर स्टार्ट ही करना है तो एटलीस्ट मतलब एकदम जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है ना उनको छोड़ दो। आई थिंक वो 3-4% वाले जो होते हैं वो मूव भी वैसे ही करते हैं। जैसे HDFC बैंक हो गया, उसमें आपको लकी होना पड़ेगा कि कुछ न्यूज आ गई, कोटक में कुछ न्यूज आ गई तो आपका नेक्स्ट डे 4-5% बन गया, तो 4-5% स्टॉक मूव हो गया तो बन जाएगा। अदरवाइज फ्रंटलाइन स्टॉक्स की जो लो आईवीज है वो दे आर सच लो आईवीज फॉर अ रीजन, उनके मूव्स भी नहीं आते हैं। तो जो बीच वाले स्टॉक्स है ना जिनके ना बहुत ज्यादा हाई हैं, थीटा डीके उतना ज्यादा नहीं है, थीटा उतना बर्न नहीं होगा, उन सब स्टॉक्स में देखो। और यार लॉन्ग वॉल में ना यू हैव टू टेक अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स फॉर यू टू मेक मनी, जस्ट लाइक शॉर्ट वॉल। मतलब शॉर्ट वॉल में सिर्फ ये होता है कि एक दो उल्टी पड़ेंगी, लॉन्ग वॉल में ये होता है कि एक दो शायद सही पड़ जाए। तो थोड़े जिनके थीटा बर्न कम है वैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके 4-5 एक साथ लॉन्ग वॉल कर दो, और फिर अगर नहीं मूव आ रही है देन यू टेक अ हिट एंड मूव ऑन, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट वंस। सो वो है। एंड पोजीशन साइजिंग के लिए व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू कीप इट, आई मीन जितना प्रीमियम बाय कर रहा हूँ मैं एक स्टॉक में, एक सिंगल स्टॉक में, अगर मल्टीपल पोजीशन है जैसे 10 तो मेरे लॉन्ग वॉल कभी हुए नहीं शायद, 6-7 मैक्सिमम हुए होंगे, तो उतने स्टॉक्स में ओवरऑल में 2 से 2.5% अकाउंट साइज का प्रीमियम बाय किया हुआ होता है। तो उससे ज़्यादा मैं एक्सपोजर लॉन्ग वॉल में नहीं लेता, फॉर द रीज़न दैट यू नो उसमें पेन देखना पड़ता है स्टॉक्स में लॉन्ग वॉल में। आई थिंक दीपक ड्रॉप्ड ऑफ, डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड। Gaurav, you want to add something? Or Pranav? I have a question actually for Gaurav on long wall. It's Yeah. a bouncing off point. What do you think? Gamma scalping or no gamma scalping? So I don't gamma scalp. I know you don't. I'm asking. So essentially, if I'm doing long wall and you're buying options, you're actually betting on the distribution of the returns that option implies, and some portion of that option is also implying that massive big move or the massive movement in the stock in one direction. And I want those right tail massive big moves on my side because I paid for it in an option. So I don't hedge my deltas on long haul side. I let them drift, and that also means that a lot of the times a very profitable position can revert and lose that money. But there are also times when it just keeps drifting and makes a lot more. Essentially, you're betting on long wall position is betting on the volatility in the market being more than implied, right? If Yes. you're gamma scalping, or you're just leaving the entire straddle there and letting it be over the entire career, the difference only comes from the difference between implied and realized, implied and the subsequent forecast. If you're gamma scalping, you're probably making your equity curve a little more smooth, and because
I am doing a lot of other things, and I'm okay taking a very variable equity curve. I don't delta hedge, and I let them drift. एक मेरा भी क्वेश्चन है गौरव. At what point do you decide that okay, this is enough money, I can book it? I just take it when it's 90 deltas. I've got Okay. 90 deltas on it. अब तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. I take it off. Okay. But not on a small delta move. Not on a small I'm not gamma scalping for small Okay. 2-3% moves. Do you think era of time based? Acha, we discussed this. I trade positional strangles Nifty perpetually and roll them over MOM for a realized target of 4%. Is something like that feasible in stocks as well? Mayank bhai, if your realized target is 4% on selling strangles in Nifty, I would say you stick with the Nifty. 4% महीने का तो बहुत है यार. मतलब उतना तो 4% मंथ का बना रहे, देन यू आर लाइक गॉड. तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट एक एडवाइस और मतलब एक टेल रिस्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ना आप. आई एज्यूम आप पोजिशनल स्ट्रेंगल्स बेच रहे हो तो नेकेड ही है, क्योंकि अगर ऑलरेडी स्ट्रेंगल्स हैं उसमें भी विंग्स बाय कर रहे हो, देन इट्स यू नो दोनों चीज खराब हो जाती है. आपका जो यील्ड है ट्रेड का वो भी स्लो हो जाता है, एंड देन पीओपी तो ऑब्वियसली लोअर हो जाती है. तो एक बार आप टेल रिस्क के बारे में पढ़ना अगर स्ट्रेंगल्स बेच रहे हो तो, कि 4%, क्योंकि स्ट्रेंगल्स निफ्टी में बेचने के लिए आई एम श्योर आपका लेवरेज कहीं ना कहीं 5-6x मतलब फुल मार्जिन यूटिलाइजेशन वाला सीन होगा. तभी 4% बन सकता है. उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स में स्ट्रेंगल बेच के 4% बन जाएगा. तो वो एक बार देखना आप टेल रिस्क के बारे में कि क्या होता है अगर कुछ मेजर मूव आ जाती है. दीपक को लग रहा है बच्चे बुला रहे हैं, ऐसा लग रहा है. हाँ समझ गया. मेरे यहाँ तो टाइम लेट हो गया, 11:30 हो रहा है, तो मेरे तो सो गए. So Mayank bhai, I mean, stick to index. If you are making 4%, just read about tail risk. What happens when one 5 days? निमेश, अरे थैंक यू सर. करते अपन बात. निमेश is my boss from previous organization. He has joined. He has wished me good luck. So I think it's time. I have not spoken to him for a long time. उस दिन तो गाली दे रहे थे तुम. अरे वो दारू में, वो दूसरा वाला बॉस था. वो दूसरा बॉस था. जो कच्चे मार लेते दीपक, आज पक्का एक बियर तो लगाई यार, झूठ मत बोल. अरे नहीं, अभी चाय पी थी दोस्तों. Okay. If we all know that market always changes and no rule will work forever, then how do we compare past chart and past scenarios with current market? तो यार ये तो मैं नहीं करता हूँ एक्चुअली. मतलब पास्ट चार्ट को देख के या पास्ट सिनारियोज की ये हुआ और उसके बेसिस पे बैक टेस्ट वगैरह करके और ये सब काम मोस्टली मैं नहीं करता हूँ. बट कैसे आंसर करें यार इसको. गौरव और बेबी दीपक कोई लेना चाहेगा इस क्वेश्चन? दीपक सर. पास्ट चार्ट्स को देख के तो होता ही है एनालिसिस. तो बेसिकली सिनेरियोज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं करता हूँ कि भाई किसी स्टॉक में राइज आया, लेट्स से अपार्ट फ्रॉम अ न्यूज़ फ्लो और समथिंग, तो चार्ट पे क्या रिप्रेजेंटेशन था. वाज इट एट सम ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर नीचे ब्रेकडाउन का फेलियर हुआ है. तो मेजरली मेरा एक्शन तो रेंज के या तो अपर एंड पे फेलियर देखने का होता है या फिर लोअर एंड पे फेलियर देखने का होता है. सो इफ आई एम एबल टू कैप्चर अ फेलियर तो वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड होता है. अब वो उस एनालिसिस पे मैं कैसे पहुंचा था वो मैंने
जिस तरीके से आपके स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं वो ऑब्जर्व किया कि भाई रेफरेंस के अराउंड या तो वो एक ब्रेकआउट देगा तो बड़ा मूव आता है, या फिर वो वहीं से फेल होके वो रेंज के अंदर घुस जाता है। सो ये ऑब्जर्वेशंस आपकी चार्ट्स देख के या फिर हिस्टोरिक प्राइस को देख के ही आती है, और उसकी मार्किंग्स जो हैं वो आप इजीली कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के सब एक्सपर्ट हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है दीपक। उसका क्वेश्चन ये क्या है सब? कि अगर हमें पता है कि मार्केट चेंज होता है, यू नो मार्केट कीप्स चेंजिंग and no rule will work forever. So what he's trying to imply probably that how do you even trade based on past data or whatever तो if you know that market will. बेसिकली आप एक ट्रेड में जाते हो तो आप एक अजम्पशन लेके जाते हो कि मैं आइदर बुलिश प्ले कर रहा हूँ या फिर न्यूट्रल प्ले कर रहा हूँ या साइडवेज प्ले कर रहा हूँ। अब उसके बाद मार्केट आपकी तरफ क्या चीज थ्रो करती है आप उसको रिएक्ट करते हो कि भाई लेट से आपने बुलिश पोजीशन बनाई और वहीं से स्टॉक आपका पलट गया इन अ वे कि इट यू थिंक दैट इट कैन नॉट रिकवर फ्रॉम हियर। तो यू हैव फ्यू ऑप्शंस कि भाई आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप यू विल लुक टू सेल सम एक्स्ट्रा कॉल्स कि भाई आपका जो डेबिट है ट्रेड में आप उसको रिड्यूस करो, या फिर आपका लेट से शॉर्ट पुट है तो आप उसको शॉर्ट कॉल को मे बी आप इन्वर्टेड लेके आ जाओगे कि आप इन द मनी लेके आ गए कि भाई इतना गिर गया वो स्टॉक। तो आप बेसिकली रिएक्ट करते हो टू व्हाट मार्केट डज टू योर ट्रेड कि वो बुलिश को कितना ऊपर लेके जाता है तो देन यू टेक अ कॉल ऑफ एग्जिटिंग। अगर वो साइडवेज हो जाता है देन ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका ट्रेड लॉन्ग कॉल है तो आप तब भी एक एग्जिट का सोचोगे, और अगर वो घुस ही गया तो आप सोचोगे कि भाई मैं डेबिट रिड्यूस करूँ ट्रेड में। तो पता तो किसी को नहीं होता, यू जस्ट रिएक्ट टू हाउ मार्केट इज थ्रोइंग सिचुएशन टू योर ट्रेड। So in my case, I have a very healthy disrespect for the past price data. I genuinely believe that what is happening in the past may not happen in the future, and betting on just it continuing uh, is not something that I feel comfortable doing. Having said that, what you can do is look for reasons why certain things are likely to happen in the market. Say, for example, two stocks within the same industry have similar economic exposures. So historically, you can look at, if I think that on average they have similar economic exposure, they are likely to move together. You look at that hypothesis, that are they moving together? Now, I am not looking at past data and saying कि भाई ये trade ढूंढ रहा है. I am saying एक thesis थी कि इनका same economic exposure है, so they are likely to move together. Is that happening? Okay, if it's happening, my thesis is correct. Then I can bet कि भाई हाँ, the industry, they are not changing. The stocks are similar. Their economic exposures are not changing in the future. Now betting on them staying together in that relationship makes sense. It's not betting on past data. It's betting on that thesis that has come out of knowing something about those companies or knowing something about that trade. That's why I think a lot of people who follow Robert James would know. He keeps harping on this. Know why you're making money. Know why your trade makes money. Know why this trade is likely to work. So once you have that reason, you are not betting on just the past data. I agree 100% with what Gaurav's saying. And just to, there are some things in past data, I wouldn't call them data really, but there's some things about the past markets that we have a reasonable assumption will continue in the future. Some of those things are like options tend to have a higher implied volatility than the realized volatility. Markets have a tendency to trend. Momentum does exist. Things like this have been seen in multiple markets across, I don't know how many ever years, hundreds of years. And we have no reason to believe that they will not stop in large swaths of time from continuing to exist. That doesn't mean that for the next 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, we could be in a market. I think Pranav got disconnected, is it? Yeah, I think so. एकदम क्लिफ हैंगर पे लाके छोड़ दिया. ठीक है.
वेट करते हैं उसके आने का, जब तक कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं. डू यू एलोकेट सम कैपिटल टू ट्रेड एक्सपायरीज? यार एक्सपायरी ट्रेडिंग थ्रिल है यार, बढ़िया थ्रिल आता है, कोई भी ट्रेड बैठा लो. एक्सपायरी ट्रेड पे क्या है कि अपन एक मतलब तुक्का लगा रहे हैं, एक डार्ट थ्रो कर रहे हैं कि आज निफ्टी 18,150 एक्सपायर होगा, इसलिए 18,150 का स्ट्रेडल बेच देते हैं. अब अगर शाम तक घूम फिर के 18,150 आ गया, या आपने दो चार एडजस्टमेंट करने के बाद वो हो गया, तो पैसे बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो नहीं बनेंगे. ठीक है, तो एक्सपायरी ट्रेडिंग का ऐसा है कि थ्रिल तो पूरा बना रहता है, इवन इफ यू आर बेटिंग वेरी लिटिल पोर्शन ऑफ योर कैपिटल, देन ऑल्सो वो जो एक बढ़िया थ्रिल रहता है वो बना रहता है एक्सपायरी ट्रेडिंग में. बट आई डोंट डू मच, मेरे को उतना कंफर्ट नहीं आता है एक्सपायरी ट्रेडिंग में, तो आई डोंट डू मच. अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड taking some help on building an algo जो इंट्राडे शॉर्ट वॉल साइड इंडेक्स में रहेगा. तो अनलेस unless I see it for let's say 3 months 6 months, how does it perform, I won't be able to comment कि मैं वो करूँगा या नहीं करूँगा. But for now it is very little portion of my book which I do. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा था, हाँ ये डिस्कस कर लेते हैं. आई थिंक इसी के लिए स्टार्ट हुआ था ये लाइव. कैन यू टॉक अबाउट योर रीसेंट ड्रॉडाउन एंड द साइकोलॉजी बिहाइंड हैंडलिंग इट? ऑल्सो इज अ 10 or 20% drawdown not common when you are trying to make about 30% per year? ओके, ठीक है. तो पहले मैं आंसर कर देता हूँ, फिर बाकी सब लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर देंगे, बिकॉज आई थिंक द थीम ऑफ लाइव वाज सपोज्ड टू बी ऑन ड्रॉडाउन. सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, डिस्कस इट आउट. Pranav has joined back. I'm adding him. Okay, so this was a first for me, at least. I mean, in the past 4-5 years of my full-time trading, the max drawdown that I had seen previously was 6%. And this is when I made decent returns in 2019, 20, and 21 as well. I mean, all the 3 years I clocked more than 30%. 2020 it was 60%. And my max drawdown was 6% during this 3-year period. 2022 भी हो गई ना अभी, तो उसी में आया अदानी. हाँ ठीक है, राइट. सो ये I mean it was not easy for me. That period was relatively tough. I think for most of us it was very tough. I was stressed out. I won't say that I was not stressed at all. So 10% drawdown is huge for me. I think if 10% drawdown and you are trying to make 30% a year, I would still say that we can work it out for drawdown to be lesser, even if it means compromising some bit on the returns. Anything above 20-25% is a good return, as long as you know what you're doing, and the drawdown which you want to face is within your acceptable limits, right? It could be different for different people. It could be 10%. Most traders who are trading expiries, I think they are okay with a 2 to 3% drawdown in a day, right? They take that risk, they assume that risk that it might happen. For me, it is something that I am not comfortable with. I mean, if it is happening in stock options through some event, that is a different case. But every expiry, every Thursday, if I'm and now that is not even a Thursday, we have 2-3 expiries, 2-3 liquid expiries. So if I'm exposing myself to a 2% risk on every day, 3 days of a week, then that is something I'm not comfortable with. So that is about drawdown compared to your returns. हाउ टू हैंडल इट? यार उसमें क्या है कि सब बोलते हैं कि मतलब ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन आएगा, आपको बने रहना है, और बोलना इजी है, ठीक है. इट इज वेरी इजी टू से कि यार ड्रॉडाउन आएगा 10% 12%, उसमें बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है. बट व्हेन इट एक्चुअली हिट्स,
even for the ones, for the systems that have been back tested to say, and then they have a drawdown of 10% and people are comfortable with 1.5x of that, they would say that they are comfortable. But when it actually hits, it is not easy. So that is there, that is for sure there. तो जब मेरे साथ भी हुआ तब ये लग रहा था यार, आई वाज थिंक लिटरली लुकिंग फॉर रीजंस व्हाई इज इट हैपनिंग, क्यों इतना ड्रॉ डाउन आ रहा है, बिकॉज अदानी एक बार हो गया, जैन में अदानी हो गया, तो जैन में अदानी जब हुआ आई गॉट अ हिट ऑफ अबाउट 5.5%. Then Feb was a regular month for me. A lot of stocks moved, here and there, and which caused about 2.5% again in Feb, 2.5 or 3% again. तो वो एक रेगुलर मंथ था. बट देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर रीजंस एज टू व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी, व्हाई दिस ड्रॉडाउन इज इंक्रीजिंग. तो उसमें स्टूपिड से रीजन ढूंढते हैं कि जैसे यार ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जब से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तब से साला पैसा नहीं बन रहा है, तब से कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर देते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के रीजंस ढूंढने लग जाते हैं लोग कि यार मेरी ट्रेडिंग तो सही है बट ये व्हाट्सएप ग्रुप कल्प्रेट है. ठीक है, तो इस टाइप के स्टूपिड रीजंस लोग ढूंढते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर देते हैं. ठीक है, तो ये सब होता है. अब अभी इसमें एक दो कैच और है. हाउ रिलायंट, आई मीन कितना पोर्शन ट्रेडिंग कैपिटल का या ट्रेडिंग प्रॉफिट्स का आपका ऐसा है जिसपे आपकी डे टू डे लाइफ डिपेंड कर रही है. मेरी अभी नहीं कर रही है ऑनेस्टली. मतलब ट्रेडिंग से अगर मेरे को 1-2 साल प्रॉफिट नहीं भी होगा, आई कैन स्टिल लिव. ठीक है, तो मेरे को उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा. तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आई वाज नॉट स्ट्रेस्ड. बट अच्छा ठीक है, मैं वो सब यहाँ पे बोलूंगा नहीं. बट पॉइंट यही है कि जब ड्रॉ डाउन आता है एंड स्ट्रेस आती है, तो अनलेस फुल टाइम अगर जाने का सीन है तो 10 बार सोचो यार फुल टाइम जाने से पहले. ठीक है, और तो बाकी लोग बताएं. So let's think of short wall as being a strategy that आपने एक basket बना लिया of a basket of say 20 stocks जिस पे आप short wall कर रहे हो. Essentially volatility trading is a max, like on average in the long term. I don't know, I've not done proper analysis, but for a retail person it's going to be a sharp probably 1 or 1.5 if you're really good. अगर and 1.5 sharp का मतलब मान लो अगर आप 30% टारगेट कर रहे हो, so your volatility will be like what, 15% पे तो 2 हो जाती है. It will be more than 15%. Now if you put it in Monte Carlo simulation, और थोड़ा यूं चेक करोगे ना कि अगर मान लो इतनी volatility के साथ में मेरा पोर्टफोलियो मूव करता है ऊपर और नीचे, you will find that 20% drawdown on a sharp 1.5 strategy is not unheard of. It happens. So अगर आपकी strategy, if you're wall short, it is likely to happen at some point of time. Having said that, you know it, I know it, it's likely to happen. But once it happens, it becomes a very difficult thing to actually, digest. Especially when you're doing it full time and you start counting everything in terms of, like I count everything in terms of opportunity cost of like my time being spent on this, and opportunity cost of what I could have done with the money. All those things you start questioning, and then it becomes a difficult thing. So factually, it is likely to come, and it will come. And in fact, I can tell you that my future drawdown will be more than what I've currently had, because that's just the markets are. There is going to be more variance in the future than what you've already seen. But knowing that does not prepare you to actually tackle it better. Like at least for me, I kept saying to myself that this is just the variance of the equity P&L. Once I zoom out 3 साल बाद देखेंगे तो ये it will look like a छोटा सा blip on my equity curve, but that blip really fucks you up. So this is definitely a trading psychology sort of thing, but I agree with 100% with everything you guys said, that whatever the math is, it's going to happen. We aren't God, or
FinTwit God or whatever, the people who make hundreds of % every year without failure, it's just hard to take a drawdown. एक मैं अपना sorry continue Pranav. I thought you were about to finish. No, I was just agreeing with everything you guys said. It's emotionally taxing. As much as you know it's going to happen, it taxes you emotionally. एक मैं अभी रीसेंट नहीं, मतलब एक बहुत पुराना ट्वीट मेरा, मुझे कुछ सर्च कर रहा था, उसमें दिखा, उसमें मैंने लिखा था कि टेल इवेंट होते हैं, और कहीं पढ़ा था कि अगर इफ ट्रेडर की एक पूरी लाइफ साइकिल जो है, उसमें एक ना एक बार तो टेल इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। मोस्ट लाइकली अगर 30 इयर्स की ट्रेडिंग लाइफ साइकिल है तो 2 बार मोस्ट लाइकली होगा, बट एक बार तो काफी प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो उसी सब को लेकर वो डिस्कशन था, तो उसमें मैंने रिप्लाई भी किया था कि यार पता है कि होना ही है, तो 15% तक ड्रॉडाउन तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ इवेंट हो जाएगा, तो 15% तो आएगा, प्रोबेबली थोड़ा ज्यादा आ जाए, अज्यूमिंग कुछ लॉन्ग बॉल नहीं है, कुछ टेल हेज रिस्क नहीं है, और वॉल्स थ्रू द रूफ है, और एग्जिट नहीं मिल रहा है, और इस सब चीजें हो रहा है, तो प्रोबेबली थोड़ा हायर भी आ जाए, तो मे बी 20% भी आ जाए, बिकॉज मेरा एक्सपोजर तो एटलीस्ट एक चीज है कि वो कंट्रोल में रहता है। तो उस थ्रेड के डिस्कशन में भी मैंने लिखा हुआ था कि आई विल बी ओके विद इट। अब लग रहा है कि यार 8-9% जब आया हिट अभी रिसेंटली अदानी में, एंड इट हैपेंड विद इन 2.5 months, राइट, तो वो एक शॉक इवेंट हो गया। तो जब एक्चुअल वो ट्रेडर लाइफ साइकिल वाला 15% वाला ड्रॉडाउन आएगा, तो वो एक बड़ा शॉक इवेंट होगा। अब मे बी 8-9% का अगर दोबारा आता है, टचवुड ना आए, तो उतना खराब नहीं लगेगा शायद, बट वही है कि यार ड्रॉडाउन्स किसी को पसंद तो होते नहीं है, तो खराब तो लगता ही है, नो मैटर व्हाट, कितना ही बोल लो कि इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर रखो, ये करो वो करो, इमोशंस आते ही है। बस रिकवरी पीरियड के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रिकवरी फिर कैसे स्टार्ट हुई। तो मार्च में फिर मैंने मेरी जो बुक थी वो ऑलमोस्ट 1x पे थी, मतलब समथिंग दैट आई डोंट रिकमेंड एट ऑल। मतलब 1x ट्रेड करना है तो क्यों ही करना है, उससे बेटर है कि यार कुछ इक्विटी लॉन्ग ही कर लो, ठीक है, वो मेरी हाइपोथेसिस है। बट स्टिल मैं 1.5x तो नहीं गई, तो 1.2x पे ही ट्रेड किया। तो मार्च मंथ वेंट फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट गया था मार्च। फिर उसके बाद अप्रैल, मई और जून तीनों महीने में वो जो 8-9% का ड्रॉडाउन था वो पूरा, थर्ड वीक ऑफ जून में आके धीरे धीरे करके पोजीशंस बढ़ाना चालू की, और थर्ड वीक ऑफ जून में आके वो पूरा रिकवर हुआ। तो अभी आई एम गेटिंग बैक टू द यूजुअल साइज ऑफ 2x 2x जो एक्सपोजर में लेके चलता हूँ, तो वो उस पर जा रहा हूँ अभी, ऑलमोस्ट देयर। तो एक किसी का क्वेश्चन भी था कि ये मतलब जो एक्सपोजर है वो कैसे मंथ के स्टार्ट में ही हो जाता है। तो यार ये रोटेट होता रहता है, मतलब एक पोजीशन जैसे जून से जुलाई में जा रहे हैं, तो थर्ड वीक में कुछ पोजीशंस जून वाली कट हो जाएंगी, जुलाई वाली ऐड होती जाएंगी, तो ओवर द वीक वो शिफ्ट होता जाता है कि उस करंट एक्सपायरी से नेक्स्ट एक्सपायरी में जाते जाते। तो ऐसा नहीं है कि 2x से एकदम जीरो हो गई और फिर से बुक बिल्डिंग शुरू हो रही है 2x की तरफ, तो वो साइकिल है पूरी। कैन यू टॉक, ये हो गया। काइरोस, गौरव के लिए क्वेश्चन है काइरोस का कि कैन यू टॉक अबाउट योर वॉल फोरकास्ट मॉडल अ बिट। So it comes up with a lot of assumptions that are usually around volatility. Now, volatility is mean reverting, volatility. So whatever is the wall recently is likely to happen tomorrow. Having said that, वो सारा गार्ड्स में भी आता है, गार्ड्स वॉलेटिलिटी फोरकास्ट मॉडल में वो सारा है। बट हैविंग सेड दैट, माय वॉल फोरकास्ट मॉडल इज नॉट based on just one forecast technique or something. I have added a lot of things in it, from the recent realized volatility to the guards forecast to everything apart from that, to essentially get an average of what I think the volatility might be. And then I take bets on that. I can take it offline because it will become, Kairos, you can text me.
ओके, काइरोस को जो अपना मॉडल है वो ईमेल कर देना, फिर काइरोस के क्वेश्चंस ले लेना। ये काइरोस इज अ नाइस गाय। CC to me. CC to Pranav. Okay, sorry guys, we won't be able to take all the questions. कितने 15 मिनट और? ठीक है, तो 15 You know minutes how long more. you guys want to go. हाँ, मतलब मैं ही लेट हूँ, तो मेरे 12 बजने वाले हैं, 12 बज जाएंगे. So I think we'll keep it on for 15 minutes more maybe, and we might not take all the questions, but important ones ले लेते हैं. जैसे अभी कोई बोल रहा है कि ऑफलोड कर दो इक्विटी, निफ्टी 12 के आए तब वापस ले लेना. तो ये बढ़िया बढ़िया है. तो 12 के कब आ रहा है दीपक, कुछ आइडिया बताओ यार, 12,000 कब आएगा निफ्टी? म्यूट 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 हटा के बताओ. You are a very good question. Okay. I've been trading since 2019. 2020 was tough but survivable. DD in 3 months, which is good man. 2020 अगर survive कर लिया है स्ट्रैंगल बेच के निफ्टी के, then I think बढ़िया ही है. अच्छा, just came here to support Ashish, Deepak and other guys. AKA 911. Thank you AKA Keto Fool. In shortfall in SSO, how do you decide to take off the position? So इसके दो वो है. एक तो स्ट्रेंगल्स और स्ट्रेडल्स, और अगर फ्लाइज तो आजकल मैं नहीं करता हूँ, बट स्ट्रेंगल्स और स्ट्रेडल्स है अगर, तो स्ट्रेंगल्स का मोस्टली 50% पे है, और स्ट्रेडल्स का एनीथिंग अबव 15% अप टू 25%. उसमें भी ये हो जाता है कि कई बार 50% से स्ट्रेंगल पहले ही बुक कर लेता हूँ, बिकॉज कहीं अगर नई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे लग रहा है वो जल्दी बेटर हो जाएगी और जल्दी वापस उसमें भी पैसे बन जाएंगे, तो और उसमें एग्जिस्टिंग वाले में अगर 30-35% भी स्ट्रेंगल में मिल गया है, तो वहाँ पे एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो आई बुक. सो वो दो क्राइटेरिया है, आइदर PNL बेस्ड है, और अगर कोई नई एंट्री हो रही है तो किसी को लात मारनी है, तो वैसे कर दिया है. Please keep this live on YouTube. I have to go out on, don't want to miss it. So it is live on YouTube. अच्छा, आगे के लिए. Okay, got it. Yeah, okay. We'll keep it. On expiry day, people trading with 15x leverage by buying OTM options. What risk do you see in this? ये तो कई बार मैंने आंसर किया है, बट इफ एनीवन एल्स वांट्स टू टेक इट अप. 15x कम है थोड़ा. आई थिंक पीपल हैव गॉन टू 25x, व्हिच वाज द रीसेंट आई सॉ. 25-30x देखा है मैंने, लोग ट्रेड कर रहे हैं. तो अगर OTM ऑप्शंस बाय भी कर रहे हैं तो उसमें रिस्क क्या है, मतलब रिस्क तो डिफाइन हो गई ना. दीपक भाई, आप आंसर करोगे इसको? नहीं यार, मैं तो वैसे ही रिस्क नहीं लेता. तो मैं तो अपने आप को इसीलिए बीटअप करता रहता हूँ आजकल कि भाई पोजीशन रख लेना, दिक्कत क्या है. मतलब अभी 7-8 पोजीशन कैरी कर रहा हूँ FNO में, तो मेरे को लगता है ज़्यादा है, क्योंकि ऑन एवरेज मैं 2 या 3 ही करता हूँ. बट सारे स्ट्रक्चर ठीक लग रहे हैं, तो बस समझाता रहता हूँ खुद को कि यार अंडर साइज ही है अभी. मतलब 7+7 भी ले लेगा तो भी 1.5x भी नहीं होगा. तो पता नहीं, 20x 30x 50x कोई कितने ले लो. अजीब ही यार. आई थिंक म्यूट हो गए तो म्यूट. सॉरी, मैं बोल रहा हूँ 15x 20x लेवरेज में भी जो OTM ऑप्शंस बाय कर रहे हो उस पे भी डिपेंड करेगा ना. कई लोग तो मतलब OTM ऑप्शंस बिल्कुल ही नाम के लिए ही बाय कर रहे हैं कि बेचा हुआ है ATM. हाँ, वही मार्जिन, मतलब बेचा हुआ है ATM और बाय किया हुआ है 2-2 हजार पॉइंट का दूर का विंग. तो वो बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट दूर या निफ्टी में 500 पॉइंट दूर, इसका क्या ही मतलब है. तो आप अगर 15x लेवरेज ले रहे हो और 500 पॉइंट दूर की विंग है, तो एक बार चेक कर लो कि अगर वो 500 पॉइंट चला गया और आपका एग्जिट पोजीशन किसी भी वजह से नहीं हुआ, तो वो कितना हिट आ रहा है. इफ यू आर ओके विद दैट हिट, तो रिस्क वो आपके लिए मतलब ठीक है, आप ले सकते हो वो रिस्क. अगर वो इफ यू आर नॉट ओके विद दैट, देन थिंक अबाउट इट कि क्या करना है.
Here they're what is talking about buying, just purely buying, I think, the question. I mean, just taking a directional trade. बाइंग Going नहीं बाय बाइंग ओटीएम ऑप्शंस है ना, तो आई अज्यूम दैट बाय बाइंग ओटीएम ऑप्शंस एज हेज, आई अज्यूम जो 48 लोग ज्वाइन किए ना अभी जस्ट मैंने चेक किया, उन 48 में से 50 लोग टाइम बेस्ड स्ट्रेडल बेच रहे हैं, तो वो मेरा अजम्पशन है। Okay. Okay. तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन सही पढ़ा है। Well, if I answer, I'll just take the question just like that. The risk is if you're buying OTM options, ultimately you are trying for a delta move. You're trying for the Nifty to, let's assume the Nifty is your underlying. You're trying for it to not only move by a certain amount, you're trying for it to make a substantial move. To get 15x leverage, you'd have to be at least what, 20 delta, 30 delta away, I would assume, at least. So you are taking on the risk that the Nifty just doesn't move at all. And that is a massive risk when you're going on leverage. Leverage hurts no matter, hurts everyone. And leverage hurts everyone the same way when it goes the opposite direction. If you're okay with that, okay. You're mute again, Ashish. Question is why OTM melts so nice after 10 minutes recommended on TV? Sorry, what? मुझे ये श्रीधर ने पूछा है, आई एम श्योर वो मस्ती करने के लिए ही पूछा है कि यार ये नितिन मुरारकर जी ने कॉल लेने बोला था, या कौन सा है वो एक और आता है कोई जय के जैकपॉट में वो पुट लेने बोला था, फिर या इस टाइप के जो भी कॉल्स आते हैं टीवी पे ओटीएम ऑप्शंस बाय करने के, उसके बाद क्या होता है उनके साथ, वो मेल्ट क्यों हो जाते हैं, ये क्वेश्चन है। सिंपल सी चीज है, वो एकदम से टीवी पे आता है तो डिमांड बढ़ जाता है लॉन्ग ऑप्शन का, एंड पीपल वो जंप टू बाय, वो अंडरलाइन से अलग बिहेव करता है। अगर आप चार्ट को उसके देखो तो स्टॉक नहीं जाता है ऊपर, बट ओटीएम ऑप्शन आपका ऊपर जाता है, तो वो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए एक क्या बोल सकते हैं उसको, डिसबैलेंस है या जो भी है, एंड दैट इज गेटिंग नॉर्मलाइज आफ्टर दैट 10 मिनट्स, क्योंकि वो डिमांड इतनी है कि पहले मैं ले लेता हूँ दूसरे को बेच दूंगा, तो पहले कोई और भी ले लेता है, वो आपको बेचना होता है। राइट। Ideal position sizing for 30 lakh capital with Nifty, Bank Nifty and CSP mix. What would be strategy for that? I think मुझे ये strategy जानबूझ के लिखा है इन्होंने, नासिर भाई की strategy को follow करते हुए। And SL. यार निफ्टी बैंक निफ्टी मैं तो ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। अगर कोई और लेना चाहे क्वेश्चन कि 30 लाख कैपिटल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो क्या आइडियल साइज है, मैं अगेन उसमें भी एक्सपोजर बेस्ड ही देखूंगा, और सिंस इंडेक्स है तो मे बी 4x तक कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही है, बट दैट विल बी द अपर लिमिट। एनीवन? I'd like to hear Gaurav's thoughts on this. What? Sorry? I'd actually like to hear your thoughts on this. So, I don't know. So, if you're doing cash secured puts and you're doing straddles or strangles, or you're being short wall, you're essentially having two risk premiums that you're trying to take. Like, if you're directionally long, you're long equities, which is an equity risk premium, and you're short wall, so that's variance risk premium. On average, that's a good bet, but you also have to know that these things get correlated very badly together at times. So if you have a long equity entire portfolio, and then you're sort of pledging it and then doing short volatility trading on that, you're taking a correlation risk on equity risk premium going down and variance risk premium also going down massively at one point in time. तो अगर ये दोनों चीजें ही कर रहे हो, you might want to think about actually capping that tail. So add another strategy maybe of buying a lot of OTM puts. They don't pay off normally, but they keep you in the business.
how to keep watch on IV of different stocks and liquidity also. Liquidity के लिए तो मैंने एक एक्सेल शीट शेयर की थी ट्विटर पे थोड़े टाइम पहले, आई थिंक 1-1.5 साल पहले. It might have changed. Unless you trade, I mean, when you start trading, you would know कौन से stocks liquid है, कौन से stocks liquid नहीं है. And IV, HV सबके लिए मैं Opstra use करता हूँ. No association with Opstra. Not happy with Opstra. But no other better product. So for the lack of better products available in our market, I use Opstra. So Sensible has something where it actually marks, it shows you liquid stocks in the sense that any stock which has the options traded in the last 5 minutes, it uses that as a metric for what stocks are liquid and what stocks are not. It's a terrible metric, but it is still, at least it gives you some idea which stocks are currently liquid and which ones are not. Yeah, which Opstra also has, but then again it is shit, just like Sensible. Sensible also I tried. I also paid Sensible को subscription भी लिया कि शायद premium में कुछ अच्छा होगा. But again, I mean, so वही है अपने when it comes to vol trading, अपने यहाँ जो ये softwares हैं, जो tools available हैं, they are not that good, any one of them, because I think उसका reason भी है, there is no market for it, right? Market सबको चाहिए. Hello. Hi. So we have a new guest. आप बहुत खुश हैं. क्या नाम है? माधव. माधव, कैसे हो माधव? बता कैसे. बताओ माधव. बोल दे जय श्री राम बोल दो. जय श्री राम बोल. अरे माधव है, जय श्री कृष्णा बोलेंगे. क्या कर रहे हैं पापा? पापा टाइम खराब कर रहे हैं. चलो ओके, चलो. वो सोनी टीवी देखते हैं ना इस टाइम पे तो. अच्छा, हाँ चलो बस खत्म करते हैं 5 मिनट में. Let's wrap it up in next 5 minutes. Okay, so भूल गया मैं क्या बोल रहा था. We were discussing the absolute crap. We'll watch our words. हाँ. So Opstra, Sensible, सब एक जैसे ही है, मतलब nothing great about any of these. कोई भी आप भी यूज कर सकते हो. हाँ. You were saying that they don't have the incentive to be any better. हाँ, right. हाँ, because 90% अपना जो वॉल्यूम है, 90 से भी ज्यादा में भी वो इंडेक्स में है, तो कोई क्यों ही स्टॉक्स के लिए काम खराब करेगा, टाइम खराब करेगा, परेशान होगा. Right? I mean, half of Sensible's new updates are on open interest. हाँ. Like, what? Why? Who cares? आजकल तो मतलब कोई भी ट्रेडर लेवरेज लेके ओपन इंटरेस्ट को चेंज कर सकता है. स्टॉक्स में तो एटलीस्ट. हाँ, स्टॉक्स में तो आराम से कर सकते हैं. I mean, they know that the open interest values that are displayed are wrong. Because there's, I forgot who is it, Nitin Kamath, who said that the foreign investors, their open interest is only added at the end of the day due to some mechanism or the other. So the intraday open interest is wrong because the largest investors aren't taken into account, but people still use it. Okay, what? Right. Madhav is already late in joining Avdut Sathe classes. अरे इसका बाप सिखा देगा उसको. अरे बाप रे. चलो, I think that should be it. We can call it off. किसी को और कुछ ऐड करना है, और अदानी के बारे में कुछ बोलना है, या कुछ और क्रिबिंग करनी है, तो let's use next 3-4 minutes for that, and then we can call it off. I'm just going to say I got very unlucky since January. एक तो अदानी में फंसे ही थे. Very? हाँ? I didn't get your voice at the later part. You got very what? Unlucky since January. अदानी में तो फंसे थे सब. हाँ. Then I was in IEX directionally long when it went down 18%. I was in Siemens directionally long when it went down by 18%. So
I've been having a massive variance in my PNL recently. हो जाएगा. कितना दूर है अभी? नहीं हो गया. हो गया. अरे फिर क्या? बस बोलने में डर लगता है यार. I don't want to like anger market gods. ठीक है, नहीं यार, कुछ नहीं होता. अच्छा, ये भी वो है, हाँ, सुपरस्टिशन जैसा, कि नहीं यार, रखते हैं, बोलते रहते हैं ड्रॉडाउन चल रहा है. Also, if you ever noticed on Twitter, he only talks about the trades which go bad. He never tells us about the trades that go well. Always Gaurav is like that only. Gaurav is like that student of engineering college will get 98% marks and probably first rank also, and then he'll say, अरे यार 2% साला कहाँ रह गया, 2 अभी भी नंबर 4 कहाँ स्टॉक गिनवा जिनमें नेगेटिव था. है. also अभी भी 4 स्टॉक वही गिनवाए जिनमें नेगेटिव था. नहीं, एक ये भी तो है ना, there's a saying that the moment you get very confident about or impressed with your own trading, that's probably the time you should offload some of the risk. अगर आप खुद की ट्रेडिंग से impressed हो अभी, take some money off. ओके यार, अभी मैं इम्प्रेस्ड हूँ फिलहाल खुद की ट्रेडिंग से लास्ट 2-1 महीने से. अभी ऑफ ले भी नहीं सकता, लेकिन क्योंकि पैसे तो बने नहीं है, इवेंचुअली लॉस ही रिकवर हुआ है, तो अभी तो रिस्क लेनी पड़ेगी यार. ठीक है, चलो. ऑल गुड देन. ऑल राइट, थैंक यू गाइस. जो भी लोग ज्वाइन किए उनको बहुत बहुत थैंक यू, एंड थैंक यू दीपक, प्रणव एंड गौरव फॉर co-hosting this with me. Chalo, okay, Yeah, bye no bye. worries. Hope it was useful for everyone. Bye. Hopefully. दीपक एक सेकेंड, इसको अभी एंड ब्रॉडकास्ट करने के बाद, अभी नहीं, टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं दीपक से. गौरव एंड प्रणव, इफ यू गाइस वांट टू लीव, इट्स ओके. उसके बाद एंड हो जाएगा ब्रॉडकास्ट और YouTube लाइव स्टॉप हो जाएगा अपने आप ही. ठीक है, और फिर उसको रखे रहना है, वो बोल रहा था. कुछ नहीं करना, वो अपने आप ही सेव हो जाएगा YouTube पे, कुछ नहीं करना आपको. ठीक है, तो बस एंड ब्रॉडकास्ट करना है, दैट इज ऑल आई हैव टू. दैट इज ऑल. ठीक है सर, ऑल राइट. बाय बाय गाइस, गुड नाइट. Good night.